आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? कंफर्म करें, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई। सर स्लाइड थोड़ा जूम करें सर, नजर नहीं आ रहा मतलब छोटे छोटे। जी जी जी, सब्र करें सब्र करें। अभी ठीक है? स्लाइड अभी ठीक है? चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We were discussing anti-epileptics. We have discussed various phenomena related to epilepsy as disease, seizure as a variety of symptoms that leads to epilepsy, convulsion as major motor dysfunctioning as one of the symptoms in seizure, and similarly some other phenomena. We have classified different types of epilepsy related to brain area of cerebral cortex that has been adversely affected, and then we have associated different types of symptoms so that different classes or different types of epilepsy can be classified according to those brain area which is adversely affected, which is being damaged, related to neuronal activity, hyperexcitability, and associated symptoms that are being produced because of that hyperexcitability in those lobes of cerebral cortex. So we have got partial, major classification in the form of partial and generalized. Partial has got sub 3 types and generalized have got sub 5 types related to age of that patient, related to symptoms of those patients, related to severity of those symptoms, and related to lobe of cerebral cortex which is adversely affected. We then classified different types of drugs. Majorly, we have got three major classes on basis of which these drugs will have to be classified. Either those drugs which act on some channels, sodium, potassium, or calcium channels. We have got other class of drug which have got action on GABA receptors. Those GABA receptors, GABA activity on this receptor will have to be potentiated. And we have got some drugs which have got antagonistic effect on glutamate on its receptor. तो ये तीन मेजर क्लासेस हैं जिसकी बुनियाद पे हमने मुख्तलिफ ड्रग्स को क्लासिफाई किया था. We have discussed two major, that was phenytoin and other was carbamazepine. Both belongs to sodium channel blocking tendency related to inactivating phase. So that inactivated phase was extended and sodium was not allowed to come from outside of neuron to inside that neuron. So if no sodium was there, it means hyperexcitability, depolarizing tendency will have to be blocked. So come to valproic acid, third major drug in that as anti-epileptic. Valproic acid is short chain branch fatty acid. Has got a major functional group in the form of carboxylic acid, and that is liquid at room temperature. It is formulated as oral syrup or can be presented as gelatin capsule.
Nowadays that is available in tablets. Valproic acid जो है वो tablets में भी available है. तो ये 3 मेजर फॉर्मुलेशन आमतौर पे होते हैं, सिरप है, कैप्सूल है और tablets हैं. More commonly, the drug is used in coordination complex. Divalproate sodium. That divalproate sodium is combination of sodium valproate and valproic acid having ratio 1:1. तो valproic acid, sodium valproate. Valproic acid अपने तौर पे है जो प्रोटोटाइप ड्रग है. इसका सोडियम साल्ट जो है वो सोडियम valproate है. अदरवाइज दोनों का जो बेसिक केमिस्ट्री है, जो मदर स्ट्रक्चर है वो एक है, लेकिन सोडियम साल्ट ऑफ valproic acid इज नोन एज सोडियम valproate. अच्छा, सोडियम valproate और valproic acid जब 1:1 रेशियो में हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं divalproic sodium. Valproic acid has got pK value, that is acid that has got pK 0.5 and is therefore fully ionized at body fluid. For that reason, active form is valproate ion, regardless of whether valproic acid or sodium salt is administered. इस स्लाइड को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैं आपसे इस स्लाइड में क्या बात कर रहा था, ऊपर स्लाइड में क्या बात हो रही थी. इधर देखें, ऊपर वाला valproic acid है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये वाला, और एक्सटेंडेड चेन है. और अगर ये सोडियम साल्ट जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर गया सोडियम साल्ट से तो ये सोडियम valproate बना. तो valproic acid वही है, देखें ये चेन है. कार्बोक्सिलिक का जो हाइड्रोजन है हम रिप्लेस कर देते हैं सोडियम आयन से, तो क्या बना सोडियम. अच्छा, ये valproic acid ये आ गया सोडियम, तो ये valproic acid लेफ्ट और राइट पे और बीच में जो है वो सोडियम साल्ट, तो इसको हम divalproic sodium कहते हैं. हम इसको क्या कहते हैं, divalproic sodium. And for those number that has been extended related to carbon chain, तो इस साइड पे भी कार्बन चेन अपने तौर पे है और इस साइड पे भी अपने तौर पे कार्बन चेन है, हम उसको कहते हैं divalproic sodium. तो valproic acid जो है वो मदर है, उसका सोडियम साल्ट सोडियम valproate है. valproic acid सोडियम valproate के 1:1 रेशियो को हम कहते हैं divalproic sodium. आपको बात क्लियर है? फिर मैं आगे जाता हूं. Yes, sir. ठीक है. Kinetics. Valproate is well absorbed from oral dose and has got availability up to 80%. सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी थी बायोअवेलेबिलिटी के एंटीबायोटिक्स में? ओरल बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी थी? ना मना फेनाटाइन नहीं, वो प्रोटीन बाइंडिंग फेनाटाइन की ज्यादा है. ओरल बायोअवेलेबिलिटी कार्बामेज़ेपिन की ज्यादा है. प्रोटीन बाइंडिंग फेनाटाइन की ज्यादा है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी कार्बामेज़ेपिन की ज्यादा है. याद रखें. पीक प्लाज्मा कैन बी रीच्ड विद इन 2 hours. इसका Tmax जो है वो 2 hour है. Oral absorption of valproic acid is good and has got 90% of plasma protein binding. Phenatyne और valproic acid का दोनों 90% प्रोटीन बाइंडिंग है. कार्बामेज़ेपिन का 70%, 75% प्रोटीन बाइंडिंग है. And that is metabolized through oxidation in liver through cytochrome P452C9 and 2C19. Excretion takes place through urine. Plasma half-life is up to 15 hours. तो काइनेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? तीन फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, डाइवल्प्रोएक्स या
कन्वेंशनल टैबलेट में भी है और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट में भी है। तो इस के यही ओरल एडमिनिस्ट्रेड है। इंजेक्टेबल्स में भी है वाल्प्रोइक, सोडियम वाल्प्रोएट जो है, वाल्प्रोइक डेरिवेटिव्स जो है, वाल्प्रोइक एसिड जो है वो इंजेक्टेबल में भी है, लेकिन इंजेक्टेबल सिर्फ हम स्टेटस एपिलेप्टिक में इस्तेमाल करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन हो और उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, उसमें हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियली अवेलेबल है सोडियम वाल्प्रोएट। आपको समझ आ रही है मेरी बात? अदरवाइज मेंटेनेंस थेरेपी में हम या टैबलेट हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली हम टैबलेट ही इस्तेमाल करते हैं। वो ज्यादा टॉलरेबल है, वो ज्यादा पैलेटेबल है, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है फॉर पेशेंट कंप्लायंस एज कम्पेयर टू अदर डोजेज फॉर्म। और पेटेट माल में चिल्ड्रन में, although this valproic acid is not preferred to be given in children below 2 years or 3 years of age, but still we can give in syrup as well. आपको समझ आ रही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं? आप इधर हैं? Yes, sir. Clear है. ठीक है। वाल्प्रोइक एसिड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है। बात याद रखें, अच्छा, एग्जैक्ट मैकेनिज्म unknown है, but we got some evidences related to three major aspects. It has got phenytoin-like effect related to extension of that sodium channel to be closed in inactivated phase. फेनाटाइन क्या करता था? सोडियम चैनल को क्लोज रखता था इनएक्टिवेशन फेज में। तो जब क्लोज होता था तो वो ओपन नहीं होता था, तो सोडियम फिर नहीं आते थे। सोडियम नहीं आते तो डिपोलराइजेशन की जो सेंसिटिविटी थी और फ्रिक्वेंसी थी वो फिर नहीं होती थी। तो फेनाटाइन, जस्ट लाइक फेनाटाइन, वी हैव गॉट this inhibitory effect on sodium channel, especially in inactivation phase that is extended. Sodium is not allowed to come from outside to neuron. Inside to that neuron, influx is being inhibited, and the depolarization chances for that sensitivity, for that frequency, for that excitability can be inhibited, can be blocked. Second aspect related to calcium channel. This calcium channel, calcium T channels that are being again blocked, so that calcium is not allowed to be increased inside that neuron, or sometime calcium channel has got attenuation. Attenuation means that is being changed for activity. Some calcium T channels are being attenuated to be increased for those calcium to go inside those neuron, and that is secondarily responsible to increase release of GABA from those vesicles at those axonal terminals. ऊपर तक जाना पड़ेगा मेरे ख्याल में। आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम? ये फिगर नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. तो यहां पे ये जो कैल्शियम चैनल है, ये वाला, ये गाबापेंटिन और प्रेगाबलिन इससे एक्टिवेट होता है। टी चैनल जो है वो इनहिबिट होता है बाय दैट वाल्प्रोइक एसिड। So excitability, positivity, depolarization is inhibited,
Do not allow calcium for depolarization. Third, augmentation of release of inhibitory neurotransmitter by degradation by transaminase. Transaminase जो इस GABA के लिए एंजाइम है that is responsible to convert that GABA into succinic derivative that is inhibited by valproate, sodium valproate, as well as it has got increasing effect on synthesis of GABA from glutamic acid through GAD. तो दोनों काम होते हैं. गैड को ट्रिगर करता है, ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज को ट्रिगर करता है टू कन्वर्ट ग्लूटामिक एसिड इनटू गाबा. आई एम टॉकिंग इनसाइड दैट न्यूरॉन एंड इट रादर इनहिबिट्स दिस गाबा टी. तो गैड GAD ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज को क्या करता है? GAD को क्या करता है? ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है टू कन्वर्ट एक्सेसिव ग्लूटामिक एसिड इनटू गाबा. तो गाबा की कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है इनसाइड न्यूरॉन. और दूसरा ये कि गाबा जो ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको जो है वो कैटाबोलाइज नहीं कराने देता. किसमें कैटाबोलाइज नहीं होगा? सक्सेनिक डेरिवेटिव्स में. वो कैसे होगा? वो तब होगा जब इस पे गाबा टी ट्रांसअमीनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है तो गाबा को कन्वर्ट करता है सक्सेनिक डेरिवेटिव्स में. तो इधर डेरिवेटिव में कन्वर्ट नहीं होने देता तो गाबा जो ऑलरेडी बना है तो वो रह जाता है, और जो नहीं बना तो वो ग्लूटामिक एसिड से बनाते हुए उसको पोटेंशिएट करता है. So both have got synergistic effect on production of that GABA inside that neuron. Subsequently, that will be released, and subsequently you can expect more inhibitory effect on GABA A receptors of those neurons postsynaptically. तो ये तीन काम हुए. तीन काम क्या हुए? फेनेटाइन के लिए सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, फेनेटाइन की तरह सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है तो सोडियम नहीं आ सकता, डिपोलराइज नहीं हो सकता. कैल्शियम चैनल्स को एंटीन्यूएट करता है तो उसकी भी डिपोलराइजिंग जो टेंडेंसी है तो वो भी इनहिबिट हो गई. और जो एगमेंटेशन ऑफ है रिलीज ऑफ गाबा एज इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, इसको दो तरीकों से इंक्रीज करता है. कैसे करता है? एक उसकी कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है और एक उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है. तो नेट रिजल्ट इनसाइड न्यूरॉन is in the form of higher concentration of GABA that will be subsequently released at synapse and will be available for occupation at GABA A receptor. आपको बात समझ आ रही है मेरी? जी सर. बाज थ्योरी ये भी है कि वाल्प्रोइक एसिड N-methyl aspartate पे भी इफेक्ट करता है. वाल्प्रोइक एसिड सोडियम वाल्प्रोएट N-methyl aspartate पे भी इफेक्ट करता है. तो उसका इफेक्ट क्या होगा वहां पे? यहां पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं वैसे ही एडिशनली बता रहा हूं. अगर N-methyl aspartate की थ्योरी होगी तो वो उसका क्या, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इफेक्ट देगा? इनहिबिशन. सही है. Glutamate activity on N-methyl aspartate will have to be inhibited. तो ये चार काम होंगे. फिर चार काम वाल्प्रोइक एसिड के साथ एसोसिएट होंगे. अच्छा, तो वाल्प्रोइक एसिड इस वजह से ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ज्यादा एफिशिएंट है इन मेजॉरिटी ऑफ दोज टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी बिकॉज इट हैज गॉट ऑल ऑफ दोज इफेक्ट रिलेटेड टू इफेक्ट है. तो तीनों के साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको मिलते हैं और इस वजह से वो ज्यादा ब्रॉडर
एंटीएपिलेप्टिक है सोडियम वॉल्प्रोएट या वॉल्प्रोएट सोडियम लेकिन क्या करते हैं उससे जो है वो बेजरीन वार्टर रिसेप्टर्स पे काम करते हैं तो ऐसे काम करता है, इस वजह से वो ज्यादा एफिशिएंट है एंटीएपिलेप्टिक्स। मैं भी जाऊं? ठीक है। अच्छा, as I've told you, valproate is first and broad spectrum anti-seizure that is thought to offer protection against many types of seizure. It is used as mood stabilizer as well in bipolar disorder and has got prophylactic treatment of migraine as well. Valproate is one of most versatile and effective anti-seizure drug that has got effect in myoclonic, atonic, generalized tonic-clonic seizure. Valproate is also effective in treatment of generalized absence seizure when the patient has got concomitant generalized tonic-clonic seizure as well. ये क्या कहते हैं, सोडियम वॉल्प्रोएट ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंस में, ड्रग ऑफ चॉइस है एब्सेंस में, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है पार्शियल में, फोकल में। वो सेकंड और थर्ड चॉइस में आता है। तो तीन काम हुए। तीन काम कौन से हुए? क्या करता है? फर्स्ट लाइन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी-सीजर ड्रग that has got effect on different types of epilepsy, but more preferred in absence, but lesser preferred in partial seizure. आप समझ आ रही है मेरी बात? ज्यादा प्रेफर्ड किस में है? एब्सेंस सीजर में है। ज्यादा प्रेफर्ड किस में है? एब्सेंस सीजर में है। लेकिन एब्सेंस सीजर में होगा, पेटेंट मैल में होगा, लेकिन उन पेशेंट को आपने देना है जिसका 8 years होगा। ये leading to adverse effect profile। एक काम ये हुआ। तो एपिलेप्सी में तो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है, ज्यादा एफिशिएंट भी है, मुख्तलिफ जनरलाइज क्लॉनिक हुआ या एब्सेंस हुआ या फिर जो है वो एफिशिएंट, अगर कम एफिशिएंट है तो फोकल लेजन्स में होते हैं जो या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, उसमें वॉल्प्रोएट एफिशिएंट है लेकिन सेकंड लाइन चॉइस है एज कंपेयर टू फेनाटाइन एंड कार्बामेज़ापिन। तो वहां पे कार्बामेज़ापिन ज्यादा प्रेफर्ड। इंट्रैक्शन, वॉल्प्रोएट plasma level of phenobarbital and lamotrigine both are anti-epileptic by inhibiting their metabolism. It displaces phenytoin from protein binding site and decreases its metabolism, may lead to phenytoin toxicity. तो phenytoin और सोडियम वॉल्प्रोएट अगर आप concomitant दे रहे हैं तो फिर आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फिर सेंसिटिविटी आती है, फेनाटाइन की रिप्लेसमेंट आती है और उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस फिर बहुत है। फेनाटाइन की टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत हैं। सोडियम वॉल्प्रोएट रिलेटिवली ज्यादा सेफ है। आई एम टॉकिंग फॉर इट्स पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एडवर्स इफेक्ट्स रिलेटेड टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक टॉक्सिसिटी।
Valproate inhibits hydrolysis of active epoxide metabolite of carbamazepine. कार्बामेज़ापिन हमने कहा था ना कि कार्बामेज़ापिन अपने तौर पे भी एक्टिव है और इसका मेटाबोलाइट जो एपोक्साइड कार्बामेज़ापिन है वो भी एक्टिव है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है. So it inhibits further hydrolysis of that epoxide. You can expect extended effect of carbamazepine related to its metabolite, active metabolite, if that is given along with valproate. अगर valproate और carbamazepine एक साथ दोगे तो carbamazepine की effectiveness increase कर जाएगी क्योंकि उसकी hydrolysis नहीं होने देता. Concurrent administration of clonazepam and valproate is contraindicated because of absence seizure that may be precipitated. Fetal abnormalities are more common in valproate and carbamazepine if they are given concurrently. We've got adverse effects. That is rare. Anorexia, vomiting, loose motion, heartburn are common but are mild. GIT based हैं वो फूड के साथ हैं. अगर आप फूड के साथ वॉल्प्रोएट देते हो तो फिर ज्यादा उसकी इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट है जीआईटी एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो और भी कम हो जाते हैं. तो वॉल्प्रोएट इज प्रेफर्ड टू बी गिवन along with food. That associated adverse effect in GIT in the form of anorexia or that vomiting or loose motion can be decreased further. Although they are already mild, but that can further be decreased when that is given along with food. तो empty stomach preferred नहीं है, filled stomach ज्यादा preferred है along food. Drowsiness, CNS related adverse effect may be in the form of drowsiness, ataxia and tremor, but that are dose related. ज्यादा डोज के साथ ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, कम डोज के साथ ये कम है. Cognitive and behavioral effect are not prominent when you talk for those valproate. Alopecia or curling of hair, weight gain, increased bleeding tendency that is being observed along in those patients taking valproate. Rashes and thrombocytopenia as hypersensitivity. Asymptomatic rise in serum transaminase is often noted. Monitoring of liver function is advised. अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये जो है ना मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं, ये सबसे मसला बनता है. एंड प्रेगनेंसी एज वेल. ये दो मेजर चीजें हैं that need to be taken care whenever you talk to use valproate as adverse effects. प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं देना चाहिए और जो चिल्ड्रन है लेस देन 3 years हैं उसमें भी नहीं देना चाहिए. It has got more adverse effect as compared to other drugs, especially related to these condition. Pregnant women, where those effects can be in the form of spina bifida and those children which are administered, which have got age less than 3 years and are administered with that valproate, it can be seen for some type of hepatitis. तो हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है उन पेशेंट में जिनका एज जो है वो 3 years से कम है और उसको आप valproate दो. अच्छा, ये पुराने जो एंटीएपिलेप्टिक्स थे तो वो इस तरह के थे. We got newer antiepileptics. We have discussed for different types of drugs in the form of lamotrigine, topiramate, and we have got some other drugs as well. ये सिर्फ 4-5 तो मैंने अभी लिखे हैं. इसके अलावा भी बहुत हैं, gabapentin भी है, pregabalin भी है और भी हैं. So these drugs have got their own activity. लेकिन हमारे अपने जो domain as antiepileptic drugs, we have got 3 major drugs that have been discussed earlier. तो जो मैंने आपको पहले 3 फेनाटाइन हो गया और कार्बामेज़ापिन हो गया और
ये तीन myoclonic valproate, atonic valproate, febrile seizure, diazepam, and status epilepticus. I've told you there is emergency condition and that has to be given mostly through parenteral administration of phosphonatine and other types of drugs. Valproate भी दे सकते हैं। अच्छा, स्टेटस एपिलेप्टिकस में कार्बामेज़ेपिन हो, फॉस्फेनाटाइन हो, फेनाटाइन हो, वालप्रोएट हो, हम चारों दे सकते हैं। डायजेपाम भी दे सकते हैं। कोई बात हो तो पूछें। ज्यादा लंबी बात आज नहीं कर सकते। बाद स्टूडेंट ने वो कहा था कि हमारे लैपटॉप में चार्ज नहीं है। ये सर बहुत है सर। हमारे यहाँ पर सर डेटा भी काम नहीं कर रहा सही तरह से। खा जी खा। कोर्स इतना बाकी है, जितना पढ़ा है उतना बाकी है। कीमोथेरेपी एक बड़ा चैप्टर है और टॉक्सिसिटी और ये जो एनसेड्स और ओपियाइड्स हैं, ये तो 1 महीना कीमोथेरेपी पूरा लेता है तकरीबन, और 1 महीने में ये दूसरे टॉपिक्स आ जाते हैं इंशाल्लाह। सर तो इसका मुताबिक आज आपकी ऑनलाइन क्लास की लास्ट क्लास है? क्यों? बाद में सर फिर आप एक महीने बता रहे हैं, टाइम तो भी माशाल्लाह बहुत पड़ा हुआ है, आराम से क्लासेस होंगी। अच्छा जी। मुझे कभी कभी गलतफहमी होती है कि मैं टीचर हूं ना, तो वो गलतफहमी आप लोगों के बातों सुनते हुए फिर मेरी दूर हो जाती है।